And honestly, like, I felt all the places were safe, and I feel like there's so many ways you can express yourself, right? So try every medium. So solo travel में ये होता है कि I think you become very independent. They're safe. I've been everywhere, all of these places, and you know it's a different experience because. Amtul Baweja is someone I know through comedy, and then I saw her perform multiple times in videos on theater, and then I saw their work. She got married to this guy, lucky guy, Fahad, and very lucky. He's also talented, no doubt. And then they got together and made Patangir and started making content. She makes comedy videos, talks about important issues related to women also. And then she does also she's shot cooking shows, travel shows. This is a person who's in a very short time has done a lot kind of work. So I thought, बिल्कुल इतने इंटरेस्टिंग आदमी को कैसे नहीं बुलाएं हम तो कैसे हैं औरत को sorry my bad. Thank you. Thank you for having me here and thank you for the wonderful introduction. I think बहुत बार मेरे साथ ये होता है कि जब मैं I try to explain my work, even I get like lost in it. I'm like, हाँ मैं इतनी सारी चीजें करती हूँ और फिर मुझे इतना वो हाँ इट्स अ गुड थिंग बट मुझे कभी कभी जजमेंट भी फील होती है कि यार सामने वाले का कोई डायरेक्शन नहीं है आपकी, कोई आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, हर चीज आप कर रही हैं, बट दैट्स द फन, राइट? आई थिंक बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, दैट्स द फन ऑफ इट, दैट यू गेट टू डू सो मेनी थिंग्स, यू नो, इट्स एन एडवांटेज. एग्जैक्टली, देयर सो मेनी वेज यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. बोरिंग हो जाता है एंड आई फील लाइक देयर सो मेनी वेज यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट? सो ट्राई एवरी मीडियम, लाइक यू आल्सो, you write also, you rap also, you sing comedy, you know. So with me also is the same, like I'm like behind the camera also, in front of the camera also, acting be, comedy be, this, that, everything. So yeah. Do you feel a lot of pressure because you're doing so much? नहीं, that is why I do it because I don't want pressure. You know, I feel like जब एक ही चीज करते हो ना, then you're like, I have to be the best at it. यही एक चीज है और उसमें मुझे मास्टर बनना है. I feel like no, like keep it easy, man. जिस भी चीजें मजा आ रहा है वो करो and just enjoy what you're doing. तो इसीलिए मुझे actually pressure नहीं feel होता because I'm doing so much and I'm having fun while doing it. I feel like if I stuck to one thing ना तो उसमें होता है कि यार अगर मैं सिर्फ actor होती, for example, I'd be like shit, इसी को करना है, इसी को अच्छा करना है, but जब एक्टिंग गिग्स नहीं मिल रहे होते हैं तो आई फोकस ऑन माय ओन कंटेंट, कॉमेडी के दिल नहीं हो रहा तो ट्रैवल वीडियोस बना ली, यू नो. वन ऑफ योर वर्क दैट आई सी दैट इज वेरी यूनिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इज द लाइक बहुत ही एक जो शॉर्ट फिल्म्स आप बनाते हो जिसमें एक्शन सीक्वेंस और सारी चीजें. आई लव दोस. आई लव दोस. या लाइक एग्जैक्टली, दैट वाज अनदर थिंग दैट मी एंड फहद वांटेड टू ट्राई आउट. Because we always felt कि like यार ये चीज कोई कर क्यों नहीं रहा, you know, and Fahad especially has an obsession with like cars and bikes and everything. So he's like, you know, I want to film cars in this way and that way. So I'm like, okay, yeah, let's do it. And then we were like, और सिर्फ यही नहीं करना कि बस गाड़ी को फिल्म कर लिया. No, we want to have a story around it too. बिल्कुल. तो अभी recently हमने एक short film बनाई थी, it was called Altrum. तो उसमें you know like we wrote a character for me which was like this mystical character, real but not really real, like a very maybe like a demon but we don't know who she is, like you know, very mystical kind of a character which kind of represented Fahad's inner demon or like an alter ego, you can call it whatever you want, but so we enjoy writing characters and building a narrative around it and tell a story, you know. So yeah, so that was something that we experimented with. So yahi maza hai, I think art ka experiment you also did something for Sony, right? So yes. So basically, we made a couple of videos for Sony. They are constant collaborators for the last 2 years almost. तो ये जो मैं Altrum की बात कर रही हूँ, हमने Sony के लिए की थी. Like we were the part of the global launch for their new cinema camera. Wow. So it was a really cool big project. Like we felt super proud. Yeah. We were like, oh my god, because like they chose around I think 12 content creators around the world, and we were one of them. That's great. To launch this cinema camera with them, so that was like a big huge moment for us. Wow. Yeah. So acha, I want to talk about traveling because I feel like you are one of people I know who has traveled a lot. So I feel like मैंने questions भी लिखे हैं. Oh, so cute. Proper, you know, talking show. You should have, you know, you should have the black cards that make it more official, you know.
But yeah, I'm saving paper. Yeah. Okay, I can appreciate Yeah. that. So solo traveling versus group traveling. अब बहुत सारे लोगों को जब सिर्फ लड़कियों को भी नहीं, अगर आप लड़कों को बोले यार अकेला तू निकल जा, तो बोले अभी ये पागल है क्या, अकेला क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा, किसी को जानता नहीं. Right. और मेरे साथ भी यही हुआ था. When I told my mother the first time that I wanted to travel alone, she was like, क्या करोगी? Like she was like, why? Like who wants to travel alone? Like what will you do? But it's very interesting because my dad had a totally different perspective on traveling. He was the one who pushed me ke, no, travel alone, solo travel is so important to develop your mind and to grow and learn and everything. And my mom was like, why? क्या करोगी अकेले, बोर नहीं हो जाओगी, क्यों, इसकी जरूरत क्या है? What was your feeling? Were you scared? No, I don't think so. Because I was. Nahin, I wasn't scared. Yeah, like I was excited, and I think from a very young age, my dad has really pushed me a lot to travel alone. तो मेरे में था कि मुझे करना है, excitement थी. I think that was the only thing that I ever felt was excitement. Yes, I wanna explore the world on my own terms, and I'll be alone with a backpack. You know, जैसे movies में नहीं देखते, backpack है और आप map देख रहे हैं, figure out कर रहे हैं चीजें. You know, I was like, yeah, I wanna be on my own. I wanna. Yeah, adventure, figuring things out on your own and everything. So yeah, so I think my first solo travel was, I think, when I was completely alone. Like, of course, I traveled completely alone. Completely alone was, I think, America in 2012. I was still in university, and again, it was my dad, and he's like, I think you should do like an exchange semester somewhere abroad, you know, to see how things are done in other universities and get some more perspective and everything. So I was like, okay. So I did a exchange semester at Stanford. So I went to US all on my own. और मेरे अब्बू ने कहा तुम वीजा भी खुद ही अप्लाई करोगे, और US का वीजा है. I was like, अमेरिका का वीजा ये तो बहुत टफ होता है अप्लाई करना, मैं अकेले ही जाऊंगी. No, you'll fill it yourself, and I'll double check it for you. But you know, that's what I love about my dad, that he empowered me so much, and he's like, no. So I remember I would be sitting in my लम्स में पढ़ रही थी मैं उस वक्त. I would be in my computer lab and I would be like filling the visa application all on my all by myself. कि shit कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ये. और हो गया. हाँ हो गया, माशाल्लाह से आ गया. मल्टीपल वीजा मिला आपकी बहन को भाई. 5 years multiple. And yeah, and I went for like, I think it was 3 महीने का semester था. And I went all alone, you know, गई वहाँ पे all the way to Stanford, everything. उनका पूरा orientation day था, ये वो सारा कुछ. And then उसके अलावा भी then I was like, I want to explore the rest of the country as well. You know, तो सिर्फ स्टैनफोर्ड में नहीं रहे, फिर मैंने अलग अलग पूरी ईस्ट कोस्ट भी देखी, वेस्ट कोस्ट भी देखी, और फिर वो पूरा I was on my own. I went to Boston alone, I went to Washington DC alone, New York alone, क्या कहते हैं, और कहाँ गई थी मैं. Yeah, that's what I remember as of now. But then Stanford की जो आसपास जगह थी, पूरा कैलिफोर्निया और वेस्टर्न, वो फिर भी I was with my friends. But the East Coast mostly I traveled on my own. तो उस वक्त I remember a mega bus थी, and it was like so cheap, like $10-15 होते थे. I would just book it एक रात पहले, grab a backpack and just get on the bus and just, you know, Boston चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, and then yeah, it was amazing. Nice. अच्छा, तो do you prefer a solo trip? Yeah, the trip with your friends. This. I don't know. It's so tough to choose. एक तो सोलो ट्रिप का क्या फायदा है? Let's note down. एक तो दो चीजें, एक तो आपके phases भी आते हैं as a human, as a person, you have phases. Sometimes you want to explore alone and you want to be by yourself, and so you like solo travel. But कभी-कभी you want to be with your friends and have company. तो आते एक तो phases होते हैं, और दूसरी what you said कि like of course दोनों चीजों के अपने फायदे हैं. तो solo travel में ये होता है कि I think you become very independent, which I loved. You know, you're booking everything yourself. और मैंने कभी भी, you know, नहीं लोग होते हैं ना पूरी आइटनरी बनवाते हैं agents और टू. I hate doing that. कि बस पैकेज बना के दे दें, आपको कुछ सोचना भी ना हो. आपको लोग उठा के पिक करके गाड़ी में डाल रहे हैं, आपको ये बता देंगे जी आज आपका ना क्रूज है, उसमें पहुंच जाएगा, आपको पिक कर लेगी गाड़ी, ड्रॉप कर लेगी, अभी आपका डिनर है यहाँ पे, and you literally आपको बस यहाँ से वहाँ पहुंचा रहे होते हैं. Because I did one. ये ग्रुप वाले जो होते हैं. And I hated it. And I was like, why are we with the group? You don't know what's happening and you paid for everything, and वो आपको जगह पे पहुंचा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं, आप अच्छा यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए. Like yeah, I hate that, right? So I feel like when you go alone, you are in control, and I love that. You making your itinerary, आप research करते हैं, तो आपको जगहों का पता भी चल रहा होता है. अच्छा ये चीज है, इसकी क्या significance है, do I want to go there? वो जो आपको बने हुए मिलते हैं ना itinerary, और आजकल के आसान है वो. अब अगोडा या ऐसी वेबसाइट्स पे जाएं, आप रिव्यूज देखें, आपको पता चल जाता है ये होटल अच्छा है बुरा है. सिटी सेंटर
इतनी चीजें आपको पता चल जाती हैं, लाइक यू नो अगर आपके पास 2 दिन है तो आपके पास वो भी होगी, इफ यू हैव ओनली 2 days हाउ टू यू नो एक्सप्लोर दिस सिटी, इफ यू हैव 1 day what things to do, तो वो इतना एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है. बट आई थिंक हाँ सोलो में यही है कि आई थिंक इंडिपेंडेंस इज वन थिंग दैट आई लर्नड, सेकेंडली लाइक प्लानिंग, thirdly managing your finances, budgeting, and honestly if you look at all these things they can be applied in actual life too. You know, so yeah, आप ठीक है एक trip और travel responsibility से, yeah, I'm taking care of yourself, your stuff, your सामान, you know, अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना, वो सारा कुछ, और ये सब चीजें आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? So I think you really learn life skills at the end, which can be applicable in any phase of life, any point in life. And group का तो of course अपना ही मजा है, वो तो बस मस्ती, शुगल, fun. It's just fun. It's just having a good time. Not thinking too much about बस जो भी हो रहा है चलो ग्रुप में. उसमें भी आई थिंक ग्रुप में भी ये लाइक अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं उसमें भी ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंदी भी होती है. ये बंदा खाने की चीजें ढूंढेगा, यू नो, ये बंदा हमारे फाइनेंसेस संभालेगा, ये बंदा फ्लाइट्स करेगा, ये होटल्स करेगा, तो वो यही होता है कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है. तो ऑफ कोर्स यू डोंट फील दैट मच प्रेशर, एंड देन ऑफ कोर्स फन, एंड देन यू लर्न टू ट्रस्ट अदर्स. एक्चुअली दैट्स व्हाट आई लर्न बिकॉज I started solo traveling first, right? And then I started traveling with friends. तो मुझे शुरू में ना कंट्रोल इश्यूज होते थे, पता नहीं कैसे होटल बुक कर लेंगे और पता नहीं कैसी फ्लाइट ले लेंगे और महंगी ना ले ले. तो वो आई थिंक ग्रुप में ये होता है, यू लर्न टू यू नो ट्रस्ट अदर पीपल, लेट गो एंड मे बी लाइक डिवाइड रिस्पांसिबिलिटीज. अच्छा ये टिकट की आपने बात की, तो टिकट हाउ डू यू इंश्योर यू गेट द बेस्ट deal on a ticket? I think सबसे पहले तो यही है कि if you want to of course save money then you have to buy directly online on the actual airline का जो portal है, जो उनकी website है वहाँ से, because of course like your agents will always charge extra, right? That's understood, but a lot of people go for agents because they have this fear कि अगर हमें कभी टिकट चेंज करना हो तो हम खुद नहीं कर पाएंगे, वो तो एजेंट ही कर सकते हैं. but that is misinformation. If you want to change your ticket you can, even online. though लोगों को लगता है कि नहीं अगर हमने ले लिया हम फंस जाएंगे, बस एयरलाइन का कोई ऑप्शन नहीं होता. लाइक नहीं होता है. It's just that people don't want to do that extra ख्वारी. And it's not ख्वारी nowadays. It's not. It's a few tick. अगर आपने स्पेशली ऐप, जो भी आपकी एयरलाइन है ना, कतर है, एमिरेट्स है, जो भी, जस्ट गेट देयर ऐप एंड एवरीथिंग इज सो इजी थ्रू देयर ऐप. तो आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि डोंट गो थ्रू ट्रैवल एजेंट्स एंड डोंट गो इवन थ्रू दीज थर्ड पार्टी पोर्टल्स लाइक आपके वो हो गए सस्ता टिकट. व्हाट अबाउट दिस चीप फ्लाइट्स और स्काई स्कैनर और जो उसमें कंपैरिजन में आई फील लाइक हेल्प हो जाता है, बट आई स्टिल गो डायरेक्टली ऑन द एयरलाइन वेबसाइट बिकॉज़ आई थिंक दैट्स द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, यू नो, क्योंकि एयर स्कैनर वगैरह पे भी एंड में जाओ, जब तक आप जाते हो एंड में चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, चेंज, हाँ वो बहुत चेंज होता रहता है. आज चेक करोगे तो कुछ है, कल चेक करोगे कुछ और है, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो एंड अनदर थिंग, ऑलवेज गो इन incognito mode because the more you search na, the more the prices keep going higher up. Oh really? Exactly. So because it catches on कि okay this अगर आप वहाँ पर देखते रहेंगे कराची इस्तांबुल, so they'll catch on to the fact कि ये तो जा रहा है इस्तांबुल, ये बंदा, तो इसको ज्यादा प्राइसेस. तो that's one hack that I like, incognito अपना मोड करो अपने लैपटॉप पे, in your surf like browser wherever, and then go check for it. So then it won't keep changing, right? It won't track your और कौन से history. months में टिकट आपको लगता है कि महंगी होती है? Okay, so 2 months, 2 like times of the year. The summer is always peak. June, July is always peak, and then December is always peak because it's New Year's. So everybody wants to travel end of November, December, you know. So that is always peak time, and your June, July is always peak time. So इसके बीच में always plan. So I think for me the sweet spot is either like October, because rush कहीं नहीं होता ज़्यादातर. Like अभी मैं 2021 में I went to Europe in October, and last year I went to Philippines in October, both in October, and they both were off season, so which was good. Rush भी इतना नहीं होता, चीजें भी इतनी expensive नहीं होती, and I feel like when it's off season ना, the hotels are also like more accommodating, and because there are not that many guests, so you get special treatment. हाँ, आपको कुछ change करना है, upgrade करना है, वो कर देते हैं. And so October for me, and then also I think March, April can also be a sweet spot for some people. Spring होता है, मौसम भी अच्छा होता है, और इतना peak season नहीं होता. अच्छा, अब हम पहुंच गए उधर, होटल में रहना चाहिए, हॉस्टल में रहना चाहिए? Okay, so I always love doing a mix.
Okay. Because I'm like हर चीज के मजे लेने चाहिए, हाँ. right? So what I usually do is, because जब आप जाते हैं तो आप थके हुए होते हैं, so I always say कि start with the most luxurious hotel. अच्छा. Because आप यहाँ पे होते हैं कराची में, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, तो you want to land and you want to go Relax. straight to a nice big bed, good place, right? So ठीक my है. thing is always start off with the most fancy होटल, Yeah. ठीक है, 2-3 दिन वहां जो भी करें, आप कर अपनी सकते हैं, थकन जो भी दूर आप करें। afford कर सकते हैं। उसके बाद आप रफ एंड टफ करें, ठीक है। right? Then you do your hostels, your boutique hotels, your Airbnbs, your छोटे-छोटे cute apartments, whatever. हाँ. And then maybe you can end another, like you can end again with a fancy hotel, like Yeah. make a nice sandwich, you know. But अगर आपका मतलब जैसे आप सोलो ट्रैवलर हैं, हाँ. या एक दोस्त भी हैं और आपके पास बजट इतना नहीं है, हाँ. देखें अभी जो पाकिस्तान में जितना है, it's so expensive to travel. So what is economical Yes. and also something that Decent and yeah, nice. yeah. So of course, like if you go, like अगर आप कहें कि मुझे बिल्कुल cheap होना है, then of course hostels is the best option. Right? Hostels are the cheapest. मतलब मैं नेपाल में रही थी हॉस्टल में जो literally 3,000 रुपए का था. ठीक है. और उसमें और सेफ था सबसे. बिल्कुल safe everything, and 2 people. I was with my Yeah. husband and we were 2 people and it was clean. We had our own bathroom. तो हॉस्टल में सबका दिमाग में होता है कि यार communal bathroom और एक ही कमरे में 10 लोग जरूरी नहीं है. So you do your research because not all hostels have that. Hostels में ना अलग अलग categories होती हैं. हॉस्टल्स में प्राइवेट रूम भी होते हैं. Exactly, which is amazing. So find those hostels. इसमें हॉस्टल भी आपका बजट में मिलेगा, हॉस्टल की आपको लाइफ भी मिलेगी. You meet people, you make friends, but then you can also get a private room with your own bathroom and just your own bed. Yeah. तो hostel में भी categories होती हैं. So of course that's the cheapest option. But another thing that I explored, like with my own travels, another beach ka thing, na hostel, na ek fancy hotel, boutique hotels, right? So that's your new niche, which is like super small, cute, quaint kind of hotels, but they're still very personal. They're small. Guest house type vibe. Actually not even guest house. They're like, मतलब समझे हॉस्टल ही वाइब है, लाइक लंबी सी बिल्डिंग होगी ये वो, बट इट बी क्लीनर, नाइसर, मोर एस्थेटिक, प्राइवेट रूम्स. सो यू नो इट्स लाइक इन द मिडिल. सो बुटीक होटल्स इज माय न्यू गो टू. सो अभी जब मैं फिलीपींस गई थी और मैंने स्पेन में भी लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ बुटीक होटल्स. और इनको कैसे सर्च करती हैं? गूगल मैप पे आप लिख लेती हैं booking.com. booking.com The best. The best. Booking.com में अच्छी बात ये कि हर चीज उसमें आती है. उसमें अपार्टमेंट्स भी आते हैं. हाँ. उसमें Airbnbs, hostels, hotels, resorts, big hotels, small hotels, everything. So then you can see what you prefer. Like Booking.com is my go-to. Like I love it, and I have my app. और उसमें जितना जितना आप बुक करते हो उतने ना आपको वो डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं. अब मैं तो कोई जीनियस लेवल 3 पे हूँ मैं, जो बड़ा ही हाई लेवल है. हाँ, तो मुझे कोई 20% डिस्काउंट उनको पता चल गया आप लव से पढ़िए. Yeah, so you know the more you book through it, आपके ना लेवल बढ़ता रहता है, तो आपको उतने डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं, which is amazing, right? सही है. So yeah, that's what I do. सही है, गुड है. मेरा ये कि हॉस्टल, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं यही हॉस्टल में रहूंगा. आखिरी का दिन शायद होटल में रह लूंगा, जरा रिलैक्स करके वापस जाए. बट मोस्टली हॉस्टल में रहता हूँ. पर मैंने ये भी किया है कि 7 और लोगों के साथ एक ही कमरे में सोना, बंक बेड्स पे. आई थिंक हर चीज एंजॉय करनी चाहिए, राइट? एंड लाइक अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सी चीजें होती है कि लोग हॉस्टल्स का सुनते हैं, हॉस्टल्स यू, एंड आई एम लाइक यू हैव नो आइडिया. लाइक आई लव हॉस्टल कल्चर. अ गुड हॉस्टल विल ऑलवेज हैव लाइक उसका बाथरूम हर एक घंटे बाद कोई साफ हो रहा होगा. एग्जैक्टली, हर 2-2 घंटे भैया आप जब भी गुजरो वहां से कोई क्लीनर निकल रहा होता है. एंड द थिंग इज दैट यू नीड टू डू अ गुड रिसर्च, right? And hostels are like they're so happening, you know. वहाँ पे हमेशा कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं. वहाँ पे अपना हमेशा they have their own club or bar or whatever. Pool भी होता है काफी में. And then you meet people, you talk to people. The vibe is just amazing. Like I love hostels, and I think everybody should try living in a hostel at least once. जरूरी है. And a good one, of course. Do your research, guys. Don't just assume and judge. Yes. अच्छा, ये बताएं कि which country that you traveled to solo made you feel safe and you would recommend to many people कि यार ये countries 2-3 जो थी मुझे बहुत, as a solo traveler I think easy to also navigate. वो भी होता है ना, पहुंच के आप दूसरी जुबान में थोड़ा बंदा को, तो कोई ऐसी जगह पे अगर कोई लेडीज हैं जो पहली सोलो ट्रिप करना चाह रही हैं तो आप वहाँ पे recommend करेंगी कि यहाँ पे जाओ? I think I went to Baku
on a solo trip and I think I felt completely safe. वहाँ पे मैंने hostel में रही थी मैं. अच्छा. And it was a lovely hostel. Met a lot of people over there. अच्छा इससे मुझे एक और चीज़ याद आई. Sorry, I'm going on a tangent. But solo travel doesn't always mean that you're also alone all the time. By the way, like you know, a lot of people को लगता है solo मतलब आप बस अकेली रूह घूम रही है अकेले यहाँ से वहाँ. भाई solo travel का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बात करने वाले ही बंदे नहीं. Solo travel literally means it's your own solo experience and you can design it however you want to and you can do whatever you want to do with your time in travel. You can meet people, you can not meet people if you don't want. So solo doesn't mean you have to be alone. Anyway, so coming back to my point, so Baku I felt was very safe. I booked a hostel on my own from booking.com. I went, got on the airport, got a cab, completely safe, got to my hostel, checked me in. I made a lot of friends over there. I made a lot of Russian friends, people from Eastern Europe. वहाँ पे we were हम लोग 4-5 लोग का ना group बन गया था. Then we were like, okay, let's rent a car together and let's explore other areas and also like the outskirts of Baku. So you know that was my solo experience. I made friends because मैंने गाड़ी भी rent कर ली और हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, you know. And जिस दिन नहीं जाना था उस दिन like I was on my own. And then there's also another thing called CouchSurfing, which I've done also, which I absolutely love. अभी भी हो रही है? हाँ अभी भी होती है. So CouchSurfing में भी ये है कि like you have to do your research because I do know a lot of people who've had like bad experiences. हो जाते हैं. CouchSurfing है क्या? हाँ, okay, so let's start with that. So CouchSurfing is basically, as the name suggests, like CouchSurfing.com एक website है. Exactly. So basically, there are people on that platform where they offer you to crash into their homes for free. So it's for free. They don't charge for that. कोई पैसे नहीं लेगा. Hardly कोई लोग कर लेते हैं, but that's also like $10 on tops. But mostly people don't charge because the people over there are just there for the experience and for cultural exchange and friendships and everything, right? तो वो कहते हैं भाई okay. You make an account on CouchSurfing and then of course it's not just like कि आप लोगों के घर में जाके crash करें, then you also should host people. But कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे कोई आपको पकड़ेगा नहीं. अबे तू 4 जगहों पर रह गया, तू अपना बिस्तर नहीं देना किसी को. तो ऐसी कोई accountability as such नहीं है. कोई आके आपका account नहीं बंद करेगा, घर में आके रेड नहीं कर देगा कि ओए हम आ गए हैं तुम्हारे घर में, तुम 4 मुल्कों में रह के आए दूसरे के घर में. तो but the idea is this कि of course you should also host other people and if you're going to their houses. वैसे मैंने भी कभी होस्ट नहीं किया आजकल किसी को, तो इट्स ओके. सो या सो इट्स फॉर फ्री, यू डोंट चार्ज एंड एवरीथिंग. एंड आप बस किसी के घर में जाके रहोगे और वो आपको सोफा देगा. Yeah, so as the name suggests, it's not very fancy. It could be a sofa come bed. You could get lucky and get a whole room also, but it could also literally be a sofa in the middle of their living room. You don't know. So वही आपको अपनी research करनी है, अपने reviews पढ़ने हैं कि पूछना है कि क्या है क्या नहीं है. And then you go there, you spend time with them and you make friendships. और अब ऐसा भी कुछ लोग क्या करते हैं, couchsurfing करते हैं और literally बस उसको होटल की तरह ट्रीट करते हैं कि गए सोए और निकल गए, राइट? बट That's wrong because couchsurfing का ये मकसद नहीं है. मकसद है मेहमान है. हाँ, आप उनसे फ्रेंडशिप करें, आप उनसे दोस्ती करें, आप स्टोरियां सुनाएं, वो आपके अपने कल्चर के बारे में बताएं, आप उनको अपने कल्चर के बारे में बताएं. जैसे हमने रशिया में couchsurfing की थी. And again it was me and Fahad. So we were a couple. तो हमने भी सोचा कि कोई couple ही ढूंढते जो हमें होस्ट करे. So we found a couple in Moscow and super sweet couple, adorable, so sweet, friendly. लेकिन उसमें यही था कि उनका couch literally was in the middle of the living room, you know, so no privacy as such. We were like, okay, it's fine. We get to meet people, make friendships. And they used to cook for us every other day. We tried like home cooked Russian food. They took us to the hidden spots जो इतने tourists को नहीं पता होते, but the locals know, right? तो ऐसे फायदे होते हैं आपके couchsurfing से because you get to live with the local, experience it like a local. You see how the houses are, how do they live. तो बड़ा ही holistic और बहुत you know superficial experience नहीं होता, बड़ा ही deep experience होता है आपका. फिर बड़ी interesting चीज़ हुई थी. So when I was in Baku on a solo trip, वहाँ पे मेरे एक friends बन गए थे Russian couple जिन्होंने हमें host किया when I went to Russia like 4 years later, which who knew, right? उस पर मेरे दोस्त बन गए. They were like, whenever you come to Russia, you have to बनाएगा. मैं कौन सी रशिया कब जाऊँगी मैं, but and काम आ गया. And then I remember World Cup हो रहा था and we were like, okay, let's go to Russia. Because वो वीजा फ्री था and everything. You're like, this is the only time we'll ever get to go to Russia because Russia का वीजा इतना टफ होता है और अगर आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो तो you don't need the visa. We're like, okay, we have to do it. I was like, wait, I have these Russian couple friends who might be hosting us. So then St. Petersburg में they were there and then they hosted me and Fahad and they were nice enough to give us
प्राइवेट रूम एंड एवरीथिंग, वहाँ पे हमारा अपना, बट वहाँ पे भी ईद यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम. और वहाँ पे तो अच्छी बात क्या हुई कि वो कपल दे वर टूर गाइड्स. Yeah. So उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? You literally living with the tour Tour guides. guides. They know the in and outs of the city, right? वो Yeah. हमें hacks बता देते हैं. आप ना यहाँ जाए, इतने बजे जाए तो आपको लाइन छोटी मिलेगी. And they would tell us कि अच्छा ये skip कर दो, इतना अच्छा नहीं है. Go there. They used to get us free tickets. क्योंकि वो tour guides थे, उनके पास टिकट्स पड़े हुए होते थे इतने सारे. काफी जगहों पे उन्होंने free tickets दे दिए. And then we wanted to buy souvenirs, so they sent us to this other shop. They were like यहाँ पे सस्ती चीजें मिलती है, हमारा नाम लेना है तो 50% off हमें मिल गया. Wow. You know, तो Nice. ऐसी चीजें होती हैं. Like you get to meet such cool people and like different experience होता है बिल्कुल. So of all the places, what places do you recommend? For हाँ, अब मैं इतने tangent पे you bring me back. तो सवाल ये था कि safe जगह क्या है? I'm like, yeah. Because I really want to know what places do you recommend? So Baku definitely I felt very safe, but Yeah. वहाँ पे language barrier थोड़ा सा था. ठीक है. इंग्लिश इतने लोगों को नहीं आती. रशियन वाज वेरी प्रेवलेंट ओवर देयर, बट ऑफ कोर्स हमें तो रशियन भी नहीं आती, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था. उसके अलावा आई हैव डन बाली ऑन माय ओन, आई हैव डन टर्की ऑन माय ओन, एंड आई हैव डन अमेरिका ऑन माय ओन. एंड ऑनेस्टली लाइक I felt all the places were safe. Yeah. You know, अब टर्की तो मैं गई थी. And easy to maneuver के मतलब यहाँ से the point A से point B Yes, जाने. very easy to maneuver. Like whichever hotel or hostel or anywhere you check in, you would get the map, and they were, because मैंने तो हर जगह hostels ही किए mostly, right? वहाँ पे इतने helpful होते हैं लोग. They would mark down all the places for me कि ये है, यहाँ पे तुम by foot जा सकती हो, यहाँ के लिए तुम tram ले लेना and everything. So the hostel people literally helped me out with everything in Turkey, especially. I remember like she gave me the map, she marked everything कि पहले दिन तुम ये 3 चीजें कर लेना, कल तुम ये 3 चीजें cover कर लेना. And I was like brilliant, you know. And I stayed वही सुल्तान अहमद एरिया के बहुत ही close, तो everything was on a walking distance. ट्रैम भी करीब में थी, ट्रैम भी आप कर लो. फिर वहाँ पे भी मैंने ये किया था कि एक टूर गाइड था, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी. मैं तो काफी पैलेस गई थी, वहाँ बाहर एक टूर गाइड था, बड़ा यंग सा लड़का था, लाइक ही वाज लाइक लेट टीन्स प्रॉब्ली, अर्ली 20s. एंड मेरी से दोस्ती हो गई, हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए, एंड ही बिकेम माय फ्रेंड एंड ही शोड मी टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एज वेल. एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट एंड यू नो जस्ट एक्सप्लोर. सो यू नो इस तरह करके यू मेक फ्रेंड्स अलोंग द वे आल्सो. But so you're saying that every country is safe? Yeah, but you just honestly have to... I went in 2016, but recently बहुत चीजें मैंने सुनी है, so I don't wanna say a lot either, because in the last couple of years बहुत influx बढ़ा है tourist का. You know, so I don't know if you've been hearing a lot about Turkey and Istanbul, but like you know female harassment थोड़ी सी हुई थी, and काफी videos भी viral हुई थी and everything. So I am a bit reserved on that point because मैं recently नहीं गई हूँ. But Bali I went twice, and एक दफा मैं अकेले गई थी, एक दफा I went with Fahad, and when I went alone, completely safe. Bikes पे हर जगह. Exactly, we used to travel. उनकी जो होती है Grab, I think it's Grab or what. So you get on the bike, you go everywhere, and वहाँ पे भी मैंने दोस्त बना लिए थे. और वहाँ पे तो मैंने एक लड़की दोस्त बनाई थी जिसकी अपनी बाइक थी. तो वो मेरी दोस्त बन गई, मैं इसकी बाइक पे बैठ के वो मुझे हर जगह घुमाती. और अच्छा उसके बाद हेलमेट भी ली था एक्स्ट्रा, तो वो मेरे लिए हेलमेट अपने एक और दोस्त से लेके आई थी. And I would sit at the back and we would go everywhere. You know, so I think. तो अभी अगर if the people need to travel and they can't afford international, because I'm sure there are many people who can't afford, so locally you've traveled a lot too. Yes. So what are few spots you would say जो बड़ी टूरिस्टी नहीं है और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग जा सकते हैं? हाँ, टूरिस्टी नहीं है और जगह जा सकते हैं वो, जैसे अगर हम कराची से शुरू करें, फॉर पीपल हु आर इन कराची एंड दे वांट टू गो टू लाइक नियर बाय प्लेसेस, राइट. सो आई थिंक द जो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग बलूचिस्तान है, that's very beautiful, and there are a lot of beaches which are not that like known. For example, one of my favorite spots is Sapat Beach, which is only 3 hours away from here, and वहाँ कोई development नहीं हुई हुई, कोई गंदे huts नहीं बने हुए, कोई concrete huts नहीं बने हुए. You can go there by road. You can go there by road. थोड़ी सी off roading आके, because Sapat के around ना sand dunes हैं, तो वहाँ पे गाड़ी हमेशा फंसती है. So keep some लकड़ीज in your गाड़ी at the back, के लकड़ी के ऊपर पे चला के आप जाए. हम हमेशा फंसते हैं, लेकिन take your own firewood, make a bonfire, take your own tent. It's a total raw
camping experience. Wow. You know, and I love that place. That's where actually, by the way, my husband proposed to me also. Fahad ne mujhe propose kiya tha, to wo extra special hai. But I love it because it's so raw, open. The beach is amazing, soft sand, blue pani, dude. It's a huge long stretch of the beach, blue water, nice. And कोई आबादी आसपास नहीं है, कोई huts नहीं है, कुछ भी नहीं है. और I've gone there with just 4 people. We were just 4 people, 1 Corolla. We went there, camped. शाम में पहुंचे, चाय वाय बनाए, नूडल्स बनाए, अपने रात गुजारी, सुबह सनराइज देखा और फिर 12 बजे तक वापसी. यू नो, सो आई थिंक बलोचिस्तान यू कैन. उसके अलावा इफ यू डोंट वांट टू डू कैंपिंग, लेकिन थोड़ा सा कमर्शियल एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक यू कैन स्टिल डू इट. इट्स उर्मारा बीच. वहाँ पे हफ्तला रिजॉर्ट्स है. वहाँ पे मैं कुछ 4-5 दफा जा चुकी हूँ, कुछ बिकॉज दैट्स कन्वीनियंट. इट्स अ लिटिल कमर्शियल. इतना रॉ और इतना कैंपिंग वाली फील नहीं आएगी, लेकिन ये है कि अच्छा रिजॉर्ट है, क्लीन है, यूजेबल है. दे हैव देयर ओन किचन, यू हैव योर ओन बाथरूम. खाना भी खुद नहीं बनाना पड़ेगा. इफ यू वांट टू फायर, वो दिल मेक यू अ बॉनफायर एज वेल. सामने बीच है. बीच इज अमेजिंग वहाँ का भी. सनसेट्स एंड सनराइज इज वेरी ब्यूटीफुल. तो अगर आपको कैंपिंग नहीं करनी, खुद से इतना मेहनत नहीं करनी, तो हफ्तला और उर्मारा बीच आप कर सकते हैं. एंड so I think Balochistan is you can explore a lot, especially for Karachi people, and if you're on a budget. Because your flights ka nahi aapko pay karna, you know, just by road you go and you're good to go. Other than that, I think जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए खानपुर दे कैन गो टू, यू नो, बिकॉज मैं भी गई हूँ वहाँ पे 4-5 दफ़ा. तो वहाँ पे खानपुर लेक है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं. आई डोंट नो अब होती नहीं होती, मैं 2-3 साल से नहीं गई. लाइक जैसे कि जेट स्कीज, और क्या कहते हैं, और क्या थी, आई थिंक वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती थी. आई डोंट नो अभी हो रही है नहीं हो रही, बट एट वन पॉइंट वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती थी. यू नो, तो इस करके वाटर एक्टिविटीज स्टफ लाइक दैट. और वहाँ पे भी यही है, यू कैन कैंप आल्सो, you know, so like little bit of nature stuff and like stuff like that. तो वो भी अगर आप you don't wanna, again, like these are all small road trips you can take. उसके अलावा कराची से करीब तो इतनी रोड ट्रिप्स हैं. आप मतलब कि कराची में अगर आप रहते हैं और आपको फ्लाइट्स नहीं करनी, तो आप ये खिंजर लेके वहाँ जा सकते हैं. राइट, यू कैन गो टू लाइक ठट्टा जा सकते हैं आप. आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ सिंध एक्चुअली. आई हैव बीन टू सेवन. दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. यू नो, पूरा उनका सूफीज़्म का जो पूरा उनका कल्चर है वो पूरा एक्सपीरियंस किया फुल. एग्जैक्टली. उनके हम श्राइन पे गए थे, वहाँ पे जो उनका पूरा धमाल होता है वो सारा देखा. वहाँ पे काफ़ी गेस्ट हाउसेस भी हैं, यू कैन स्टे देयर. आई हैव बीन टू बिटशा एज वेल. अगेन अनदर आई थिंक 7 hours by road. And बिरछा का भी जो मज़ार है, it's like another experience, full Sufi vibes, और वो कलाम पढ़ रहे होते हैं. Like, you know, we should explore. And what about that side? Ranikote है, you can go Ranikote, you can camp over there as well. Again, road trip. Sakhar है, you can explore that. Like, and it's safe to camp here and there? Yeah. Very safe, very safe. थोड़ी सी roads खराब है. You know, थोड़ी सी कहीं आपको rough patches मिलेंगे, but these are all accessible. You can go in your car. They're safe. I've been everywhere, all of these places, and you know, it's a different experience because up north तो of course है ही है, but I feel like up north के अलावा ये जो हमारी provinces के अंदर जो ये है ना चीजें, mountains तो I know they're there and they're beautiful, but I feel like these cultural things, these things get overlooked a lot, especially Sindh में. There's so much. There's also like मीरपुर खास, उसके आसपास इतने गांव हैं, greenery है इतनी. You can go there. Like there's so much. And yeah, so these are all Gorak Hill Station. Yeah, I've been there also. Gorak, you can go. Ranikote, I love Ranikote. You can go there, camp there as well. So all of these places. So I mean, whatever your budget is, you can make time and make the plan and try to escape and अपना मुल्क देखें. Exactly. जहाँ पे आप रहते हैं वही देख लें. Because that is most accessible and it's right here. No visa required, no flight, nothing. Exactly. Yeah, so that's pretty cool. Thank you. Yeah, thank you. Those are some good advice. I think this is probably the most functional podcast जहाँ पे actually किसी को कुछ मिलेगा, बोलेगा हाँ ठीक है मुझे बचत हुई है. I hope so. Like I hope काम है ये चीजें. Yeah, I hope more people get to travel because of you. I hope so. Thank you. Guys, better travel now. Pressure is on. Yes, I'm waiting. watching you guys.